Hi everyone, welcome to Mathematical Wisdom. In this video, we continue 2019 Dsssb Statistical Assistant paper. This is the fifth part of this series. For earlier videos, I am providing link in the description. So let's start with question number 161. For the distribution, the first quartile is 2, third quartile is 4 and the median is 3. And we need to find out the Pauli coefficient of skewness. हमें Pauli coefficient of skewness निकालना है. So that firstly हमें Pauli coefficient of skewness पता होना चाहिए. Pauli coefficient of skewness का formula होता है SB equals to Q3 minus Q2 minus Q2 minus Q1 Q3 minus Q2 plus Q2 minus Q1. So steps substitute कर लेते हैं. This is Q1, this is Q3 and this is Q2. So ये सारी वैल्यू substitute कर देते हैं. Then this will be 4 minus 3 minus 3 minus 2, 4 minus 3 plus 3 minus 2, 1 minus 1, 1 plus 1, so 0 by 2, so it is equal to 0. So the correct option is option number 1. Next question is, let mu I are the ith central moment, okay, of the distribution. If the distribution is symmetric, which option is correct? इनमें से हमें कौन सा बताना है, इनमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो बताना है. सो सेंट्रल मोमेंट क्या होता है? दिस इज कॉल्ड सेंट्रल मोमेंट. और हम इसको कैसे लिखते हैं? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स बार एन एफ एक्स डी एक्स. और हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो एंड 0 to infinity xn fx dx and here xn fx dx. So let's take this part. Zero to infinity xn fx dx. Let's suppose x takes value u. Then this is 0 to infinity un fu dx du. So this is a. Let's suppose this is a. Next, consider this part, negative wala part, which is minus infinity to 0 x bar n fx dx, and now consider x equals to minus u. So here it is minus infinity to 0 minus u bar n f of minus u and dx. अब हमें ये पता है कि जो n है, n is odd, हम odd के लिए कंसिडर कर रहे हैं. So therefore it is minus infinity to 0 u to power n, and we know that f is symmetric. So f of minus u is equals to f of u. So we simply put it here, f of u dx, which is equal to minus a. So this is minus a and this is a. From here, when we substitute these values, minus a plus a, we get 0. So the correct option is option number 1, which is odd moments are always 0 in case of symmetric distribution. So the next question is, the coefficient of correlation is this between x and y for a sample size 16. The limit of correlation in the population is. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसमें सबसे फर्स्ट हमें क्या करना होता है? प्रोबेबल एरर निकालना होता है, विच इज़
0.6745 1 minus r square by root n. एंड नेक्स्ट हमें इनकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देनी है, विच इज़ 1 minus 0.80 square and here it is under root 16, so we get 0.6745 1 minus 0.64 by 4, which is 0.6745 into 0.36 by 4. Here it is cancel out, it becomes 0.9 and we just need to multiply these terms and we get 0.0607. नेक्स्ट हमारा काम होता है टू नीड टू फाइंड आउट इंटरवल के लिए हमें ये ऑब्टेन करना पड़ता है. दिस इज़ द इंटरवल. So 0.80 minus 0.0607 and here 0.80 plus 0.0607. From here we get 0.7393, 0.8607 and these both points are equivalent to option number 4. So the option 4 is the correct option. Next question is, if the coefficient of correlation is given, the coefficient of non-determination is. हमें coefficient of non-determination निकालना होता है and we know that coefficient of determination is simply r square. So it is 0.9 square, which is 0.81. So coefficient of non-determination obtain करने के लिए we just need to subtract 1 from r square, that is 1 minus 0.81. From here we get 1.9, 0.19. So the correct option is option number 2. Next is, the coefficient of correlation is geometric mean of. So हम जब lines of regression पढ़ते हैं तो हमें पता है कि जो coefficient of correlation है उसका square equals to by(x) into bxy, जहाँ पे ये regression coefficients होते हैं. So r equals to by(x) bxy power 1/2. And this is called geometric mean of byx and bxy. So we can say that coefficient of correlation is equal to geometric mean of coefficient of regression. So option 4 is correct. Next is, the coefficient of correlation and covariance between two variables are this and this. If the variance x is 16, the standard deviation of y. So हमें जो options जो information given है सबसे पहले वो लिख लेते हैं. r is equal to 0.3, covariance equals to 9. Next, variance of x equals to 16. So variance अगर given है, so we can find sigma x, which is equals to 4, it is under root of 16. So, and we know that r is equal to covariance of xy, and here it is sigma x, sigma y. Now we need to substitute all these values. 0.3, 9, 4 and sigma x, sigma y is not given. So यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं. It is 9, 4 into 3 into 10. Which is 7.5. So the correct option is option 1. Next question please.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चनिंग ऑल द मेंबर्स ऑफ अ गिवन पॉपुलेशन इज कॉल्ड. हमें सारे जितने पॉपुलेशन के सारे मेंबर्स हैं सबसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. दैट इज वी नीड टू एनुमरेट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन. सो दिस इज कॉल्ड एज सेंसस. इसे हम सेंसस बोल सकते हैं और इसे आप ध्यान रख सकते हैं हमारी पॉपुलेशन सेंसस में. जैसे हमारी पॉपुलेशन सेंसस होती है उसमें हम हर इंडिविजुअल के पास जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री. So that is also called census, and here it is also called census. So population census is an example of census. Next is, which of the following classification contains partition with the label A, B, C1, C2, D and E? सो ऐसी जो हम पार्टीशंस करते हैं उन्हें बोलते हैं सोशल ग्रेड्स. नेक्स्ट इज क्लस्टर सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग आर द टाइप्स ऑफ. ये सारे रैंडम सैम्पलिंग के पार्ट हैं. रैंडम सैम्पलिंग मतलब जहाँ पे हम बायसनेस नहीं होती है, रैंडमली सैंपल सेलेक्ट होता है, उसके ये सब पार्ट हैं. सो द नेक्स्ट इज Which method is generally used in qualitative sampling? क्वालिटेटिव सैम्पलिंग जब हम करते हैं तो हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? देन वी यूज़ कोटा सैम्पलिंग. हम उस टाइम पे कोटा सैम्पलिंग यूज़ करते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. थैंक यू सो मच. इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे. थैंक यू.